Hello students. So today we are going to discuss about the second lecture of thermodynamics, and in this आज हम बात करेंगे about something called as state of the system. Now, what do you understand by the state of system? एक system का state मतलब क्या होता है? So the very basic meaning is the state of the system is that form of system, मतलब उस सिस्टम का टेम्परेचर, उस सिस्टम का प्रेशर या उस सिस्टम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, उसका वॉल्यूम कितना है, is basically the state of the system. If you want to define the state of the system, we can define it as a physical condition of a system in terms of state variables such as pressure, volume, number of moles is called as the state of the system. अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, सबसे पहले व्हाट आई कैन से इज कि अगर आप स्टेट चेंज करते हो, मतलब आपने प्रेशर का यूनिट चेंज किया, नॉट यूनिट, प्रेशर का मैग्नीट्यूड चेंज किया या वॉल्यूम चेंज किया या नंबर ऑफ मोल्स चेंज किए, तो ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, you will come across a change in the state of the system. Meaning, if you say you have a beaker जिसमें let's say the pressure is P1, temperature is T1, volume is V1, number of moles is N1. अब इसमें से आप कोई भी एक चेंज कर लो या सारे ही चेंज कर लो, तो आपको एक नई सिस्टम मिलेगी जिसका प्रेशर होगा P2, टेम्परेचर इज T2, वॉल्यूम इज V2, N2 is the new number of moles. So what has happened? Basically, यहाँ पे आप इसको बोल लो state 1, then this one would be referred as state 2. अच्छा, इसमें से एक होगा इनिशियल एंड एक होगा फाइनल, तो ऑब्वियसली स्टेट 1 विल बी द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट 2 वुड बी द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. मतलब जब आप पानी गर्म करने के लिए रखते हो तो तब उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, बट एज यू कीप ऑन हीटिंग इट, व्हाट हैपेंस, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. सो आफ्टर हीटिंग, लेट्स से 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो कुछ भी है, यू वुड से कि हाँ, आई हैव अचीव्ड अ चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर. ओके, फर्दर अगर अंडरस्टैंड किया जाए एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को, देन हाउ वुड यू डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? तो ध्यान रखना बच्चों, thermodynamic process is a event in which change of state occurs by modifying certain state variables which are also called as thermodynamic variables. Okay, so an event which changes the state of the system by modifying the state variables is called as a thermodynamic process. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स आप वेरी कर सकते हो? तो ऑब्वियसली एज डिस्कस्ड अबव, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या फिर टेम्परेचर, आप इसमें से कोई एक वेरी कर लो या सारे ही वेरी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट देन in thermodynamics, all the properties or all the variables are divided broadly into two categories. दो categories के variable होंगे. कौन से? Let's see. The first one is extensive and the second one is intensive. Acha, what do you mean by extensive and what do you mean by intensive? I would give you a very simple shortcut. Okay, intensive means independent. कैसे याद रखेंगे? Intensive starts with I means independent. Okay, अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं extensive properties. What do you understand by extensive properties? तो सर वो properties जो मास के ऊपर डिपेंड करते हैं या जो सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे would be referred as extensive properties. Examples. The very first example is any form of energy, enthalpy, entropy, Gibbs free energy and volume. Okay, अब इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स सपोज आप जिस रूम में अभी बैठे हो, ओके, आप इमेजिन करो कि आपने उस रूम को डिवाइड कर लिया यूजिंग सर्टेन पार्टीशंस. तो एवरी पार्टीशन विल हैव डिफरेंट वॉल्यूम. ओके, हर पार्टीशन जो है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एंथैल्पी डिफरेंट होगी, एंट्रोपी डिफरेंट होगी, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी. Okay, so these factors would be referred as what? These factors would be referred as extensive factors. Similarly, what are intensive factors? So intensive factors obviously वो factors which are not dependent upon the mass of the system. वो भी देखते हैं. चलो, what are intensive factors? Once again, कैसे याद रखेंगे? I say intensive, I say independent. So the properties which are independent on the mass of system are referred as intensive properties. मतलब ये लोग सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बच्चों, अगर
मैं आपको लेट्स से 1 स्पून शुगर दूं खाने के लिए, तो 1 स्पून शुगर वो भी स्वीट टू टेस्ट होगा, ओके। 2 स्पून्स ऑफ शुगर वो भी स्वीट टू टेस्ट होगा, एक शुगर क्यूब वो भी स्वीट होगा। सो यहाँ पे ये जो स्वीटनेस है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, दिस टेस्ट डजंट डिपेंड कि आप कितनी शुगर खाते हो। ऐसा होगा क्या कि 1 चम्मच शुगर खाने पे वो मीठी लगेगी, लेकिन 2 खाने के ऊपर वो आपको लेट्स से you would find it spicy or you would find it sour. No, it won't happen. You would still find it out as sweet to taste. So what is taste over here? Taste is nothing but the factor or the property which is independent on the mass of the system. अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? तो देखो, द एग्जाम्पल्स फॉर इंटेंसिव बहुत सारे: temperature, pressure, density, refractive index, specific heat capacity, viscosity, electrode potentials, concentration terms like molarity, molality, normality, percentage mass by mass, percentage volume by volume, everything यहाँ पे आएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर, हाउ कैन concentration terms be called as intensive properties? Because हमने स्टडी ये किया है कि फॉर concentration, let's say molarity is dependent upon number of moles. I absolutely agree. बट यहाँ पे बच्चों एक सिंपल सी चीज आप ये अंडरस्टैंड करो कि concentration terms मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे इफ आई से कि आपने एक कप में पानी लिया, उसमें यू एडेड शुगर, ओके, तो द एंटायर वाटर वुड बी स्वीट टू टेस्ट। अब अब आप पूरा पानी पी लो तो भी स्वीट टू टेस्ट होगा, या उसमें से एक चम्मच पानी पी लो तो भी स्वीट टू टेस्ट होगा। तो आप क्या बोलोगे? यू वुड से दैट द concentration ऑफ वाटर इन द एंटायर कप और द concentration ऑफ वाटर इन दैट स्पून इज वन एंड द सेम। एक और एग्जांपल, अगर आप बोलते हो कि यू हैव 1 मोलार ऑफ लेट्स से सॉल्ट सॉल्यूशन, देन 1 मोलार सॉल्ट सॉल्यूशन में से आप एक चम्मच पानी लो, वो भी 1 मोलार होगा, या 2 चम्मच पानी लो, वो भी 1 मोलार होगा, या 10 चम्मच पानी ले लो, या पूरा का पूरा पानी ले लो, वो फिर भी 1 मोलार ही होगा, राइट? सो ओवर हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स, हम लोग इस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं दैट द कंसंट्रेशन विल ऑलवेज रिमेन एज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना सैंपल लिया है, सैंपल के साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत सारे टर्म्स हैं जो ऑब्वियसली आर न्यू टू यू, लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, specific heat capacity, viscosity, electrode potentials, pressure, density, all these terms, okay. But now for the matter of fact, आप इसको फिलहाल के लिए याद कर लो। जब we will study all the terms in detail, that time we'll come to know why are they extensive, why are they intensive, so don't bother about it, okay. The further thing which I would like to suggest over here is when you're talking about temperature, आप एक एग्जांपल ले लो, टेम्परेचर, प्रेशर, इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं। आप जिस रूम में बैठे हो, ओके, अगर आपको इस रूम का टेम्परेचर चेक करना हो तो आप क्या करते हो? You don't take the thermometer to every corner of the room, right? You just take the thermometer or you just take the measuring device and आप उसको रूम में प्लेस करते हो and then you measure the temperature, है ना? अच्छा, this suggests what? कि इस पूरे रूम का टेम्परेचर, even if it is divided in many fractions, अगर इस पूरे रूम को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो तो भी इस रूम का टेम्परेचर सेम रहने वाला है। Therefore, temperature is it dependent upon the size of the system? No. तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई। सिमिलरली अगर प्रेशर की बात करोगे तो आप इमेजिन करो कि आपकी ही रूम, आपने उसको डिवाइड किया इनटू मेनी स्मॉल सेक्शंस और मेनी स्मॉल कैबिनेट्स। अब हर कैबिनेट में प्रेशर कितना होगा? ये प्रेशर तो 1 atm ही होगा, है ना? अनलेस यू आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल प्रेशर ओवर देयर, करेक्ट? सो प्रेशर इज अगेन व्हाट? उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट डिपेंड अपॉन द मास और द साइज ऑफ द सिस्टम, है ना? देयरफॉर अगेन इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। फ्यू मोर एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको बहुत अच्छे से याद रखोगे। एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड काइनेटिक एनर्जी। These three examples you would remember as a special mention. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि these examples are example for extensive or intensive, then these are the example for extensive. What exactly is enthalpy, entropy and kinetic energy? Definitely हम लोग study करेंगे in the upcoming modules, but as of now बस इसको याद रखें, ठीक है?
फर्दर अगर इंटेंसिव के एग्जांपल्स पूछे जाए तो ध्यान देना, एंथैल्पी के अगेंस्ट मोलार एंथैल्पी, एंट्रोपी के अगेंस्ट मोलार एंट्रोपी एंड काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट मोलार काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें अंडरस्टैंड करो, जब आप मोलार एंथैल्पी बोल रहे हो दैट मींस तुम ऑलरेडी ये स्पेसिफाई कर रहे हो दैट द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इज इक्वल टू 1। मतलब आपने सैंपल मास ऑलरेडी बता दिया है कि 1 मोल के लिए हम लोग चेक करेंगे, 1 मोल के लिए चेक करेंगे, मतलब size of the sample is fixed and therefore now they become which property? They would become independent of mass or intensive properties। इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ था। बट बिफोर दैट लेट मी पुट डाउन वन मोर थिंग फॉर यू। pH, even this question was asked in your exams, pH, is it extensive or intensive? तो ध्यान रखना, pH, the formula is negative log of H positive। negative log of H positive मतलब it depends upon concentration of H positive ions and thus it is an intensive property। इसको याद रखना, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, छोटा सा एग्जांपल। ओके, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो these are your following options: dielectric constant number 1 and specific heat capacity। So out of these you have to identify which property is extensive and which property is intensive। चलो let's see। सबसे पहले, what do you understand by dielectric constant? Now dielectric constant is the ability of any solvent to resist the dipole dipole interaction। okay, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये कभी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर आप बोलो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 82, देन आप 1 लीटर पानी ले लो तो भी 82, आप 2 लीटर्स पानी ले लो तो भी 82, you take 1 ml then also 82, you take 1 spoon then also 82। so it doesn't depend upon mass, that means it is independent of mass, and therefore what you would say is that this property is what? This property is an intensive property। okay, this property is intensive। Similarly, अगर next property की बात करें, specific heat capacity, ये what do you understand by the word specific? मतलब एक specific mass के लिए, तो यहाँ पे again mass is mentioned, मतलब mass fixed होना चाहिए, and अगर mass fixed है तो definitely now you can't vary the size of the system or the mass of the system, and therefore again even this property will be an intensive property। okay, so this was the question। अच्छा, अब एक और notion को understand करते हैं। let's see, again this is an important understanding that we need to make। अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेते हो तो वो रेशियो हमेशा क्या निकल के आएगा? वो रेशियो हमेशा निकलेगा एज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लिया जाए तो you'll get the answer as intensive। let's see few examples। the first one is density। अच्छा, what is density? mass over volume। mass is an extensive property, volume is also an extensive property। तो देखो, दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या बन गया? इंटेंसिव। डेंसिटी ऑफ एयर चेंज होगी क्या? अगर आप पूरे रूम को लेट्स से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो तो ऐसी होगी क्या? एक तरफ एयर थोड़ी डेंस, दूसरी तरफ एयर थोड़ी स्पार्स? नो, द डेंसिटी ऑफ एयर विल रिमेन द सेम। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मोलार काइनेटिक एनर्जी। नाउ एज वी फर्स्ट सेड, काइनेटिक एनर्जी कौन सा प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। मोल इज आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो kinetic energy, mole, both extensive, ratio becomes intensive। further up is surface tension, very very important, इसके ऊपर सवाल आया हुआ है। okay, now surface tension can be related as the ratio of force per unit area, not exactly force per unit area, ये formula नहीं है उसका, but yes, the general notion of the formula is force per unit area। force is an extensive property, area again it depends upon the size of the system, so therefore even this is extensive, iska ratio is intensive property। ध्यान रखना, this question has been asked in your competitive exams। okay, surface tension whether it is extensive or intensive, ये question आया हुआ है, तो ये एक important understanding होगा। okay, next up the last one is specific heat capacity। now what do you understand by specific heat capacity? it is the heat absorbed by
a specific mass. What is that mass? देखते हैं बाद में during the exact definition. But yes, the heat absorbed by a specific mass at constant temperature. Meaning heat is extensive, mass is extensive, temperature is an intensive property, but nevertheless, though extensive properties है, उनका ratio क्या बन जाएगा? Will be an intensive property. So specific heat or specific heat capacity is also an intensive property. Okay, so this was all about the two types of variables, intensive and extensive variables, about the state of the system. We'll meet up in the next module with few more understandings of the terminologies of thermodynamics. Till then, students, thank you and happy learning.